Good morning, class. So we will start our next topic of the chapter air, that is temperature. So temperature is what generally temperature is measured in degrees, and when the degree of hotness and coldness we know that is called the temperature. So generally when we go to the higher from equator, you can see the polar region, so the temperature decreases, and when we come back to from polar to equator, temperature increases. So temperature is you feel every day, and in the atmosphere, the temperature of the atmosphere changes not only between the day and night, but also season to season. Season to season, generally we categorize the season like summer season and winter season, like this, and summer and hotter than the winter. So day and night, but also the season to season, summers are hotter than the winters. And an important factor of the influence of distribution of influences of temperature, that is insolation. Insolation is a process when the incoming solar energy intercepted by the earth. इंटरसेप्टेड मीन्स कंट्रोल कर ली जाती है, रोकने से मतलब डायरेक्ट रेज जो है वो हम तक नहीं पहुंचती. First they are trapped in earth, and after that we get the you can say temperature. और मतलब हम हमको जैसे उसको डायरेक्ट नहीं मिलता, तो पहले वो अर्थ तक पहुंचती है, फिर हम उसको फील करते हैं. So the amount of insolation decreases from equator towards the pole, as I told you, कि जितना जितना हम ऊपर जाएंगे, जितना जितना इक्वेटर से आगे बढ़ेंगे, उतना उतना क्या होगा, टेम्परेचर विल डिक्रीज. एंड जितना जितना हम यू कैन से माउंटेनियस रीजन पर भी जाते हैं, जिससे क्या होता है, वी फील कूलर. So here some pictures have been given, like the barometer, it measures the temperature, and atmospheric pressure and thermometer, it measures the temperature. Then after rain gauge, it measures the rainfall, and wind vane, it shows the direction of the wind. So temperature decreases in the same manner. Now, do you understand why the pole cover with snow? Obviously, temperature is low and the earth is temperature rises too high, and it would become too warm. Some crops to grow in temperature in the cities is too warm, and the crops to cities in the sorry, the temperature in the cities is much higher than the village. Why? Where you can ask this question to yourself and can answer yourself. क्योंकि cities में क्या है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी है, दूसरा ग्रीनरी नहीं है, और तीसरा ऑटोमोबाइल्स ज़्यादा यूज़ होते हैं. ठीक है, ट्रैफिक बहुत है, सो द और इंडस्ट्रीज हैं, सो द कंक्रीट एंड द metals buildings and the asphalt of the roads get heated up during the day. Asphalts बोलते हैं, it's a kind of mineral, कोल तार, when it is used for making the road. ठीक है, जो ब्लैक कलर का यूज होता है, इसको एसफॉल्ट्स बोलते हैं. सो दिस हीट द रिलीजेस this heat is released during the night. Also, the crowded high-rise building of the cities trap the warm air and thus rise the temperature of the cities. So this was all about the temperature. Now the air pressure. Air pressure, that we have seen that above us the pressure with us a great force of our body. Sometimes if I say in simple words कि जब हम कुछ भी नहीं करते तब भी हम बहुत थक जाते हैं. क्यों थक जाते हैं बिना कुछ किए हुए भी? क्योंकि एक ये ऐसा एक इनविजिबल प्रेशर है जो हम पर पड़ता रहता है हमारी बॉडी के ऊपर. तो यही हमारा एक इसी को हम एयर प्रेशर बोलते हैं. हाउएवर वी डोंट feel it, and it is because the air pressure us from all the direction. और ये खाली ऐसे ही नहीं कि हमारे सिर से पड़ रहा है या हमारी बॉडी के एक पर्टिकुलर पार्ट से है. इट अफेक्ट्स फ्रॉम ऑल द साइड. ठीक है, चारों तरफ से हम पर आकर पड़ता है. एंड अवर बॉडी एक्सर्ट्स द काउंटर प्रेशर, और उसी फोर्स के साथ हमारी बॉडी से भी, मतलब एक तरीके से दोनों तरफ से फोर्स, तो हम उसको जो मतलब लाइक वी टॉलरेटेड और वी कंट्रोल दिस. सो ये एक तरीके से काउंटर प्रेशर हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, समटाइम वी फील टायर्ड. सो एयर प्रेशर इज defined as the pressure exerted by the weight
on the air or the earth surface. So as we go up the layer of atmosphere, the pressure falls rapidly and the air pressure is the highest at the sea level. अब यहाँ पर क्योंकि हम प्रेशर पढ़ रहे हैं, so in coming segment you will see the एयर प्रेशर ऑन द अर्थ की वहाँ कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रेशर है. लाइक बेसिकली इफ वी टेल अबाउट द प्रेशर ऑन द अर्थ दैट इज ऑन सी लेवल. तो सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ होता है? सी लेवल पर होता है. एंड डिक्रीजेस टू द हाइट. और जैसे जैसे हम सी से माउंटेन की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? ये डिक्रीज होता चला जाएगा. यहाँ हाई प्रेशर है और यहाँ लो प्रेशर होगा. So horizontally, the distribution of air pressure is influenced of the air and given this place in areas where temperature is high and air gets heated and rises, and this creates a low pressure area. Low pressure is associated with cloudy sides and the wet weather. मतलब whenever we don't have sun, so at that particular period of time temperature भी आपका कम होता है और प्रेशर भी लो हो जाता है. So in the areas having lower temperature the air is cold. जहाँ पर लो टेम्परेचर है वहाँ पर हवा ठंडी होगी. ठीक है, तो क्या होगा? It therefore heavy. ठंडी होगी तो हैवी होगी. Heavy air sinks and creates a high pressure, and high pressure is associated with the clear and sunny skies. So air always moves from high pressure to low pressure. High pressure to low pressure. High pressure कहाँ पर है? For example, this is the map of India. Sorry. This is the map of India. This is the Arabian Sea. ये आपका हाई प्रेशर हुआ. यहाँ पे आपका माउंटेन है हिमालयाज. यहाँ आपका लो प्रेशर हुआ. ठीक है, तो ये सर्कुलेट कैसे होगा? हाई से, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. So always move from high pressure to low pressure areas. Another topic is that wind. The movement of air from high pressure area to low pressure area is called wind. You can see that the wind work at blows dry leaves, drown pavement, or the uprooted the trees during the storm, and sometimes when the wind blows gently you can even see the blowing away smoke in fine dust. And sometimes and the times we can be strong wind can be strong and it difficult to walk against. It would have experience. It is not easy to hold an umbrella on the windy day. Think of some other example of strong wind have been created the problem for you. Simply you can imagine wind को आप wind क्या है? एयर और विंड में डिफरेंस क्या है? विंड इज शोइंग द स्पीड. ठीक है, जब बहुत गस्टी विंड चलती हैं, तेज हवाएं चलती हैं, तो क्या होता है? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड अवर सेल्फ इवन. ठीक है, यू कांट टेक अम्ब्रेला, यू कांट मूव अगेंस्ट द फ्लो ऑफ विंड. लेकिन उसी तरीके से अगर वो जेंटल है तो क्या होता है? बहुत अच्छी लगती है. अगर हवा है ही नहीं, ठीक है, बहुत काम है, ठीक है, दे आर नॉट ब्लोइंग, तो वो क्या होगा? हमें कई बार ऐसा है व्हेन वी सी इन द स्काई कि व्हेन यू कैन से प्लेन और सैटेलाइट्स आर मूविंग, तो वो बहुत अपने पीछे एक स्मोक जैसा छोड़ जाते हैं. वो क्या करते हैं? दे वो इट शोज दैट the moisture in the sky. So winds can be of three types, that is permanent winds, seasonal winds, and local winds. So this particular thing by the diagram you can understand, and in the video I have shown. So video which I sent today, you will see permanent winds क्या है? जो हमेशा बनी रहती हैं. ठीक है, दे डोंट शिफ्ट. उनको ट्रेड विंड्स भी बोलते हैं. ये क्या है? वेस्टर्लीज और ईस्टर्ली. वेस्टर्ली का मतलब जो वेस्ट से आने वाली है. किसके वेस्ट से आने वाली है? अर्थ है आपका, ये वेस्टर्न, सॉरी ये वेस्ट है और ये ईस्ट है. या हम अपने कंट्री की बात कहें तो ये आपका ईस्ट है और ये, सॉरी ये आपका वेस्ट है और ये आपका ईस्ट है. तो
तो वेस्ट से एंटर होने वाली वेस्टर्लीज और ईस्ट से एंटर होने वाली ईस्टर्लीज आर परमानेंट विंड्स, दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो ये कभी चेंज नहीं होती, हमेशा हमारे कंट्री में बनी रहती हैं, वेस्टर्ली और ईस्टर्ली। सेकेंड इज दैट सीजनल, सीजनल कौन सी विंड है, मॉनसून। We know that this is the monsoon period running, and from the month of June monsoon enters in India, so this is called the seasonal wind. Local winds, these blow only during the particular period of time on a year small area. लोकल विंड्स मतलब एक टाइम पर, जैसे कि समर में चलने वाली विंड को क्या कहते हैं, लू। सो फॉर एग्जाम्पल लैंड सी और land and sea breeze, do you recall the hot and dry local wind northern plains of India is called Lu. So these three kind of wind we have discussed, and they are the picture is given here. So northern trade winds, ट्रेड अब जो आपने पढ़ा है उसको ध्यान में रखेंगे। प्रिवेलिंग वेस्टर्ली विंड्स, प्रिवेलिंग वेस्टर्ली और ईस्टर्ली, पोलर ईस्टर्ली, पोलर ईस्टर्ली, क्योंकि ये आपको पूरा ग्लोब का पिक्चर दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा हम सिर्फ ये देखेंगे कि इक्वेटर पे जो है आपकी प्रेशर जो है एक साथ बना हुआ है, वो आपका नॉर्थ और साउथ से बराबर पड़ता है, तो यहाँ पर एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद हम जैसे से ऊपर आएंगे तो पर्टिकुलर एरिया है जहाँ दोनों तरफ से, नॉर्थ और साउथ से एयर प्रेशर पड़ता है। ठीक है, फिर आप पोलर रीजन पे देखते हैं, तो पोलर रीजन पे क्या है, हाई प्रेशर होगा। हाई प्रेशर क्यों होगा, क्योंकि टेम्परेचर लो है। वाई इट इज लो, बिकॉज सन रेज आर स्लंटिंग। ठीक है, जहाँ टेम्परेचर लो है वहाँ प्रेशर क्या होगा, हाई, और जहाँ टेम्परेचर हाई है वहाँ प्रेशर क्या होगा आपका, लो। So this was the diagram. Better you can understand by the help of video. So thank you. Have a nice day.